को संदीप. सो ये क्लिकबेट तुम्हें करना है. द लास्ट लाइन ऑफ योर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. इट हैज़ टू बी क्लिकबेट. I am going to be dropping the bomb there with an interview panelist is going to asking you, hey, tell me more about this. All right, okay. Hi everyone. Welcome on board. Let's get the party started. आज है मेरा क्लास और आज हम बात करने वाले पर्सनली टू पीपल have joined into the first question for the day. Tell me something about yourself. First question for the day. Tell me something about yourself. We'll try to cover as much as possible. जितना हम कर पाएंगे उसको हम कवर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. All right. Tell me something about yourself. Number one. देखो यार, इसमें ना 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग के अंदर फिक्स करनी है. नंबर 1 क्या चीज़ होती है? एक तो तुम्हारा सॉरी मेरा है ना ये कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया. पीयूष तब तक चल तेरा सुन लेते हैं. पीयूष, व्हाट वुड यू लाइक टू हेयर फ्रॉम देम? देर ऑल टॉपर्स, देर ऑल कैट 99%. सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी हर्ड योर वीडियोज आउट. बट यार तू क्या सुनना चाहेगा इसके अंदर? तू मुझे बता. एंड नॉट योर आंसर, मुझे वो नहीं सुनना है. अब तू बड़ा हो चुका है. नाउ यू ग्रेजुएट, इट्स बीन 2 years आउट ऑफ कॉलेज. नाउ यू कॉर्पोरेट गाय. यू स्पेंड सम टाइम विद McKinsey. What would be your things which you would like to tell? So, sir, a few things, let's say I obviously don't know. I'm just trying to behave as a panelist here. I don't know any of the folks who are here, and so if somebody's entering, that is the first, obviously, the warm-up question. Now, I would like to probably understand and see, where somebody is from. Let's say, that used to be my first point. Now, remember, guys, all that we spoke about. Tell me something about yourself. It is a pitching place. You are here. It is the maximum time which you can own. I would want to connect to you with whatever number of personal connections I can establish as a panelist. The more you do it, the better it is for you. I may end up and speak 80% of the times on just one thing which I like about you, which will come from you. Tell me about yourself. Maybe your city, obviously there is a thin line in the descriptions that you give and how much important it is. So let's say, guys, I am really interested to know where are you from? Let's say, at least the city and the state name maybe, but not much more details. Not about how many members are there in your family, etc., etc. Not needed there. City, at least I have always, obviously you have to tell your name. So we'll structure that. To begin with, but maybe the interviewer is obviously around from somewhere, some area, etc. That will hit the chord first. Maybe you may end up, and that's the sequence how we learn about prepare about the interviews, which you would have been hearing that 2 months, 3 months people start preparing. So this is where I may strike a conversation with you about your city, state, something happening, your politics about that place. What do you like or dislike? You may match my interest, you may not, but still you can go ahead and defend that very well. So that is the first point I want to know. Then of course, sir, the ACE logic which you were mentioning, that follows in everything which has happened to you after you were born. I would mention about my graduation, number 1, whichever place it is from, and then ACE from that place. So let's say graduation, college, then academics, curricular, or maybe extracurricular, any of these things, whichever is the best part there. I'll not mention everything which I've done across my 4 years of engineering. I'll mention the top 2-3 things maybe, which will be discussion pointers, which the interviewer is actually grasping right now. I'll move to the next phase in my life, which could be a work. Obviously it is only available for the people who have worked upon, but mention about your workplace, again an ACE from your workplace. What did you, by ACE obviously I don't mean academics at your workplace, but what were your best 2-3 things which were there at your workplace? For example, I used to end up my answer at the last and very most important point, which will be picked up by the interviewers to begin the discussion. For me, because I was working in Vedanta before, which was actually Kane Oil and Gas. It was into oil exploration, but so I was picked up by Anil Agarwal, who's Vedanta India, and the world head. He was formulating a team. They were picking up the first year who had just entered the company, and based on the performance and certain etc. evaluations, they had picked me up amongst some one person selection out of 10,000 folks. I used to mention that in the end. Should you mention that? Will it be boasting? No.
please do mention something which they may not know but they would want to pick up, because you need to entertain and talk as much further while you have stopped answering this question. And that is your playing field, guys. Obviously, the specific pointers which you drop, which are special highlights, you need to prepare for them, but do drop them at those respective. What you just heard Rahul sir mentioning in between, dropping the bombs. So, at whatever places you have been in your life, keep on dropping those bombs. And yes, prepare 2 or 3 answers, which will be, from 45 seconds to 1.5 or 2 minutes, not more than that. So you need to, kind of manage that basis how much time the panelists are actually giving to you. So I think, sir, these 3-4 things. Obviously, the folks who don't have experience need to probably talk about a couple of more things from their college times. Yeah. Maybe corporate stuff, some research paper, something which is on a broader, I would say, acceptance and agreement. Let's say something national paper presented, etc., or an NGO in which they would have actually worked. You can mention that also. So yeah, those things. आज इतनी सही बात हुई ना मेरे साथ. आई मेट अ गाय, CFO of a company. He brought that company from around 5 CR, which is like Indian, in fact 2 CR रेज किए थे आज से 5 साल पहले. और भाई ये बंदे ने, CFO ने, आज वो कंपनी को $2 billion की ले गया है. $2 billion, guys. This is so amazing. और मेरा डिस्कशन इतना सेक्सी था ना, जितना सेक्सी था ना. ओके, होल्ड ऑन. किसी का सुनने को और दिल कर रहा है? डू वांट टू नो द डिस्कशन व्हाट आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी विद हिम टुडे. दिल कर रहा है सुनने का, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया. समझ रहे हो ना? ये मैंने बॉम्ब थ्रो किया तुम्हें. सच्ची मिल के आऊँ मैं, सच्ची में, कसम से, ठीक है? सच्ची मिल के आऊँ. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसने 63 डेज़ के अंदर $1 billion कंपनी को $2 billion बनाया. आई मेट हिम टुडे, इनफैक्ट कपल ऑफ आवर्स बैक. या समझ रहे हो? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, या 63 fucking days, 63 fucking days. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तुम्हें करना क्या है अभी? अब मैंने बॉम्ब 60 थ्रो किया. मेरे इंटरव्यू के अंदर जो पीयूष ने बहुत सही बात बोली, एस करना है तो आपको एंड में करेंगे. उसके बाद डिटेल बताऊंगा, पूरा सेशन करूंगा, मिलवा देंगे चलो आपको, ठीक है? रुको पहले बात सुनो. हाँ, तो यार तुम्हें करना क्या है? लास्ट थिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्पीक ऑन द योर स्टाइल इज स्पीकिंग लाइक अ क्लिकबेट ऑन इंटरनेट. बिल्कुल संदीप. सो ये क्लिकबेट तुम्हें करना है. जो लास्ट लाइन ऑफ योर tell me something about yourself, it has to be clickbait. I am going to be dropping the bomb there with the interview panelist is going to asking you, hey, tell me more about this. Like मैं एंड करता हूँ. आई रिसेंटली गॉट एन अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनफैक्ट रिसेंटली नहीं, काफ़ी देर हो गई. नॉट एन अवार्ड, अबाउट फैसिलिटेशन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो आई वाज इन द राष्ट्रपति भवन फ्रॉम इनसाइड एंड हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लंच अलॉन्ग विद देम. इट वाज रियली अमेजिंग. तो या काफ़ी अमेजिंग. तो मैं इतना बोल के रुक जाऊँगा तो बंदा पूछता है, अब क्या किया तूने वहाँ पे? तो ऐसा कुछ सोचो. कभी ना कभी तुमने भी लाइफ में कुछ ना कुछ किया हुआ है. नहीं किया हो तो सोचो कि व्हाट कुड बी द लास्ट थिंग व्हाट यू कैन पुल इन. ठीक है? मूविंग इन फॉरवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स, मूविंग इन फॉरवर्ड. लेट मी जस्ट कनेक्ट माई मैक, जस्ट अ सेकेंड. 5 seconds, guys. All right, sorry guys. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. What if they stop me in between? I'm not able to convey. अबे you have to convey, इसलिए तो बोल रहे हैं. आगे चलते हो बच्चों, आगे बढ़ते हुए. Academics, एस क्या होता है? एक तो जो पीयूष ने एस बताया, यू टू एस अप इन द इंटरव्यू. आई कॉल देम स्पाइक्स. ठीक है? इंटरव्यू के अंदर स्पाइक्स लाना बहुत जरूरी है. ठीक है? 3 या 4 स्पाइक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जहाँ पे उसका मुंह खोला रह जाए. ओह फक, दिस इज गुड. ओह नाइस, दिस इज गुड. Oh nice, this is good. I always tell them when you're going to go out of the room, I'm just going to remember, यार वो चश्मे वाला था ना, धनिष्ठ, वो बहुत अमेजिंग था यार. वो श्रेया बंदी थी ना, बड़ी क्यूट सी, वो बहुत सही. यार वो कर्ली हेयर वाली थी ना, आनंदिता, वो बहुत सही बंदी थी यार. हाँ, वो पंजाबी लड़का जो आया था ना, वो मोटू सा, गोलू सा, वो बड़ा सही था. आई रिमेंबर हिज थिंग दैट वो स्कूल में हेड बॉय भी था. एंड द गाय हु रेज्ड 2,000 रुपीज़ in 1 hour's टाइम बाय आस्किंग, वो जो MTV रोडी में पार्टिसिपेट करके आया था, ऐसा करके. अभी रोडी चीज़ अगर किसी ने की है लाइफ के अंदर, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, आई एम गोइंग टू बी रिमेंबरिंग सच थिंग्स फॉर श्योर. तो ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो कि इंटरेस्टिंग. आई डोंट हैव, इवन इफ यू डोंट हैव समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ सोचो तो सही यार कि तुम क्या कर सकते हो. दैट 1 थिंग और इनफैक्ट 3 स्पाइक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? हाउ वुड आई आंसर बॉयज एंड गर्ल्स? द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आज हम थोड़ी देर के अंदर रैप अप करेंगे. हाउ वुड आई आंसर दिस क्वेश्चन? यू कैन डू इट टू वेज. इंपॉर्टेंट स्टफ. वर्क प्लेस से स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी ग्रेजुएशन पे जा सकते हैं, फिर आप को करिकुलर में जा सकते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में जा सकते हैं. ये मेरी अचीवमेंट्स वाला स्लाइड है वैसे. ठीक है? ध्यान से. एकेडमिक्स, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, ये अचीवमेंट्स का स्लाइड है. बट जब हमें करना होता है ना, तो तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. ध्यान से. विच इज़ बेटर बॉयज एंड गर्ल्स? वर्क एक्सपीरियंस
graduation, school, or school, graduation के work experience. Choose one. WGS के SDW. Choose one. Everyone, choose one. फट. Okay, काफ़ी लोगों का confused answer SDW. Okay, hold on. You guys are a smart lot यार. तुम इतने होशियार बच्चे आ जाए हो, 99% वाले तो टॉपर्स बैठे हो यहाँ पे. हाँ, सारे लोग इतने होशियार लोग हो. अब मुझे एक बात बताओ, हैव यू ग्रोन अप विद एज? हैव यू बिकम स्मार्टर? जो तू स्कूल में था और जो तू अब हो गया, तो बेटर हो गया कि नहीं? ऑब्वियसली, राइट. स्कूल में तुम जो अच्छे बच्चे हैं, राइट, कोई नालायक बच्चे, सर मैं स्कूल में टॉपर था, बाद में नालायक हो गया ना, पहले से थोड़ा बेटर हो गया, राइट, पहले से बेटर हो गया, राइट. तो पहले तो तुम बेटर ही होते हो. या स्कूल में टॉपर होने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है. स्कूल की बातें किसी को सुननी नहीं है. अ नॉर्मल किड, अ गुड पर्सन इज एक्चुअली इम्प्रूविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, इज एक्चुअली इम्प्रूविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तुम स्कूल में जैसे भी थे, स्कूल को उल्टा रख के यू गाइस कैन स्टार्ट विद स्कूल, move to your graduation, and your last thing should be work experience, because this is the thing you remember. I want to start with the work experience so that you end with the work experience. अमित गुंजेटी, यार वो तेरा सेक्सी आंसर नहीं रहेगा, तेरा स्टोरी नहीं बन रहा. एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाओ. इफ़ यू आस्क मी, द बेस्ट इज स्कूल, देन ग्रेड, देन योर वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो इंटर्नशिप. जहाँ पे भी करना है तो वहाँ पे एक एक चीज़ छोड़ते जाना. रुको, ध्यान सुनो. अगर मैं स्कूल का नाम, सर आई एम फ्रॉम मॉन्टगोमरी गुरु नानक पब्लिक स्कूल. अबे यार, तेरा मॉन्टगोमरी गुरु नानक स्कूल था, मैं की करां यार, मैं की करां उसका, समझ रहे हो सर. समथिंग, अगर मेरा इंटरव्यू थोड़ा कैजुअल होगा तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ. मी एंड माई ग्रैंड फादर बोथ वेंट टू द सेम स्कूल, बाय द वे. डू गाइस नो दैट? बट ही वेंट टू इन द मॉन्टगोमरी गुरु नानक स्कूल इन पाकिस्तान, and I went to the Montgomery Guru Nanak School in Punjab. So that's an interesting story to start with if I want to. Yeah, अगर आपका रिज्यूमे वगैरह रॉक सॉलिड है, यू गाइस कैन ब्रिंग इन समथिंग नाइस. या bombs in every stage. या समझ रहे हो. I mean the whole school actually moved from the Pakistan वाला Punjab. I'm not a Pakistani, but yeah, my grandfather was in Pakistan. This whole school moved in. समझ रहे हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट्स गोना बी गुड. स्कूल के अंदर अगर हेड बॉय हो, कोई लीडरशिप चीज़ की हुई है, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन नहीं, बट हेड बॉय, हेड गर्ल, प्रीफेक्ट एक्सेट्रा, लीडरशिप, वेरी गुड. ध्यान से, आई डोंट वांट टू लिसन टू योर चैट. 2 मिनट के लिए ध्यान रखिए. यहाँ सुनिए, स्कूल में कुछ तो बढ़िया, ध्यान से, ठीक है. एनसीसी वगैरह ऑफ हो गए, ध्यान से इधर आओ. ग्रेजुएशन में अगर तुम अकाउंट्स में टॉपर रहे हो, एक सब्जेक्ट में तो कभी ना कभी गलती से इंजीनियर भी टॉप कर लेता है. मैं भी सेकंड ईयर में गलती से पीयूष एनआईटी में टॉप कर लिया था, पता नहीं कैसे हो गया था. बाद में लोग भी हैरान थे कैसे टॉप कर लिया मैंने, मतलब टॉप 3 में था. एक आधे सब्जेक्ट में तो यार एनआईटी आईआईटी में भी तुम लोग कभी ना कभी तो 100 में से 90 पता नहीं कैसे आ जाता है, पर आ ही जाता है. वो वाली चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो ग्रेजुएशन में. और बिल्कुल प्रूफ रिक्वायर्ड. ओ भाई, कोई झूठ बोलने को नहीं बोल रहा हूँ मैं. टॉपर फॉर 4 ईयर्स, बहुत लोग टॉपर होते हैं, बट एक आधा सब्जेक्ट का जिन लोगों ने टॉपर किया, वेरी गुड. हाँ, एक आधा हाईलाइट, बहुत बढ़िया. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम NIT सूरतकल इन फलाना फील्ड एंड आई वॉज मिस्टर NIT, या जो भी बेस्ट एलुमनाई. आई वेंट टू SPJain बॉम्बे. या वर्क एक्सपीरियंस है, आई वॉज इन जनरल इलेक्ट्रिक. आई गॉट 3 CIO अवार्ड्स फॉर कंसेक्टिवली 3 years ऑफ माई ग्रेजुएशन, और सॉरी वर्क एक्सपीरियंस एट GE, राइट. तो यहाँ से आप एंड कर सकते हो. कई बार, एक मिनट रुकिए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में कई लोग अपनी हॉबीज़ करते हैं. अगर तुम्हारी हॉबीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी गुड. सर माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब दिस इज सो स्टूपिड टू एंड योर आंसर्स. या नहीं, ज़रूरी नहीं है ना भाई टॉपर होना, ज़रूरी नहीं है. या इट्स वेरी स्टूपिड. अगर आप करना चाहते हो, मुझे नहीं पसंद हॉबीज़ के बारे में बताना, बिकॉज यार एक सामने वाला पैनलिस्ट इज़ हायरिंग यू टू गेट इन टू द बिजनेस स्कूल, ताकि बी स्कूल में आके यार तुम थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो. ट्रैवलिंग करेंगे बाद में. हॉबीज़ का मेरी पूरी स्लाइड है, वो डिस्कस करूँगा. बट यार मेरे को एक बच्चा चाहिए जो स्कूल में अच्छा था, ग्रेड में अच्छा था, वर्क की बात कर सकता है, इंटर्नशिप की बात कर सकता है. दैट्स व्हाट आई वांट, राइट. इसके अलावा मुझे हॉबी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. अंडरनॉलेज कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. पॉलिटिक्स वगैरह अवॉइड करना. पीयूष, डू वांट टू ऐड समथिंग टू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बिफोर वी लेट देम गो? Yeah, I think we have mostly covered, sir. And the order, I agree. The one which you mentioned, let's say I'll start with the school, try to establish those personal connects. Then I'll move to, the things which I've done recently in my life, drop the bombs. Maybe something which I've done latest, will be definitely bigger than something which I've done at school. I may have won an inter-school competition. Great. It would have been really perfect, in my 10th, 11th class. But now he's a guy, again, always believe and remember who are your panelists.
Obviously you have to probably mold your answers a little bit, and the whole flow in which you actually do. There are younger professors also at IIMs and SPJains and on all the places, and there are older ones also, more on the older side, right? So you will have to see while you enter your rooms, who are the 3 folks sitting, 2 folks sitting, are they young or not? Your answers and the flow will change. But I would agree, sir, the latest achievements is something which I'll focus more on. So hence the order will be in your trajectory of life again, because you would have done something relevant as a professor to me very, very recently. You have been working at your place, you have done a project, or maybe something great. And the other point which people were asking, can we mention about our hobby and tell me something about yourself? Yes, you can. You got to defend that also if you believe that is a glorious point for yourself, right? So you can do that, but yeah, at certain risk. If you have done some real work, it's not a hobby which you have acquired just say 1 month back. Talking about reading and writing, have you published some articles? You have been writing in a particular column, etc. Not sure if anyone would have done that, but let's say you have published probably 3-4 articles, in a newspaper, or you have written blogs. People are there who are being interviewed. They've written in, let's say, 50 blogs across a span of 5 months. There are people who have written on Quora, for example, across the past 2 years. They have 50K followers already. Now that's something which I will mention in reading and writing also. Just to have an impact, because for sure this will be a really different one. Not many people will have it. Great. Boys and girls, reading, writing, listening, we are here to hire academicians. I don't want you to end your answer of tell me something, sir, I'm a dancer, I'm a Bollywood dancer, singing. ठीक है यार, मुझे मैं क्या बोलते हैं वो कौन सा आता है, डांस इंडिया डांस का ऑडिशन नहीं ले रहा हूँ यार, समझ लो मेरी बात. तो जितना एकेडमिक तू कर सकता है वो ज़्यादा अच्छा है. येस, व्हेन ही इज ट्राइंग टू नो यू बेटर, देन डेफिनेटली यू गाइस कैन थ्रो योर हॉबीज. वो लाइट मोड में है तो लाइट मोड में जाओ, बट ओवरऑल एकदम अपने आप को प्रेजेंट करो दैट यू आर लर्नड गाय. व्हेन यू गोना कम टू बी स्कूल, यू नॉट गोना बी चिलिंग आउट. चिल करते हैं हम लोग, बट यू नॉट गोना बी चिलिंग आउट फॉर श्योर. All right, boys and girls, I'm going to be closing the session right now. I hope you guys enjoyed it.